परिवार भाव भी कैसे रहे, सभी समन्वय करके एक गेट टुगेदर करके और कैसे हम अपने बिजनेस को ठीक कर सकते हैं, समाज में अब क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इन सब पर आज चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से भी आज हम यहाँ आए और ये जो पूरा राजस्थानी समाज जो है, ये कर्मभूमि यहाँ चेन्नई है इनकी, और ये वहाँ से भी कनेक्टेड रहे राजस्थान से, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया गया है। इतना ही आज बहुत अच्छा लगा यहाँ इन सब के बीच में आने। Thank you. ஆளுங்க every industry, whether it is steel, metal, electrical, pharma, alla industry, because in the 450 பேர் they are representing vertical industry. So every industry we are talking எப்படி நீங்க உங்க turnover 3x 5x பண்ணலாம், எப்படி நிறைய employment கொடுக்கலாம், ஆளுங்களுக்கு எப்படி நிறைய employment வரும், எப்படி இங்கிலிருந்து 5 வருஷம் அப்புறம் நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி, டெக்னாலஜி என்ன வந்தினே இருக்கு, ஏஐ எல்லாம், அது எப்படி நம்ம பண்ணி நல்லா பிஸ்னஸ் க்ரோத் பண்ணி எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்து கவர்மெண்ட்க்கு ஜிடிபியில் க்ரோத் எப்படி கொடுக்கும். வேலை வாய்ப்பு தமிழகத்திலேருந்து வரணுமா இல்லை வெளிநாட்டில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து, ஏன்னா எல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஆல் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஃபார் லாஸ்ட் 70 years. ஸோ தமிழ்நாடு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கும், ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி கொடுத்துனே இருக்கும். அதை எப்படி டபுள் ட்ரிபிள் பண்ண முடியும், அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி டபுளாக பண்ண முடியும் தமிழ்நாடுல, அதுதான் க்ரோத் ஸ்டோரி. आप बोलिए सीधा। आज राजस्थानी समाज, माहेश्वरी समाज और अग्रवाल समाज, समस्त वैश्य समाज द्वारा इस बीजवेस्ट कॉन्क्लेव में के इस कार्यक्रम में आना हुआ और लगभग 450 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। उन प्रतिनिधियों को नए नवाचार, 9 स्पीकर्स इसमें आए हैं जो अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे। हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नए समय के साथ चलते हुए नए नवाचार करते हुए किस प्रकार से हम सभी को साथ लेकर के सक्सेस स्टोरी भी। வணக்கம், நரேந்திர ஸ்ரீமால், பிரசிடென்ட் ராஜஸ்தானி அசோசியேஷன். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே சென்னையில் 3 அசோசியேஷன், ராஜஸ்தானி அசோசியேஷன், ஸ்ரீ மைசூரி சபா அண்ட் ஸ்ரீ அகர் ட்ரேட், 3 பேர் சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னையில் ஒரு பிஸ்னஸ் கான்க்ளேவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கான்க்ளேவில் we want to promote business entire in Tamil Nadu. So business fulla promote பண்றதுக்கு இந்த கான்க்ளேவ் பண்ணியிருக்கோம். eminent speakers கூப்பிட்டிருக்கோம், from Amitabh Kant, G20 Sherpa to Sarthak Ahuja to John T. Rhodes to Kamlesh Jain. So lot of speakers, full day is a speaker session. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம ஹானரபிள் மினிஸ்டர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வந்திருக்காரு. அண்ட் ராஜஸ்தான்லேருந்து ஸ்ரீ கௌதம் குமார் தாக், who is also cooperative minister as well as civil aviation minister. அவர் ராஜஸ்தான்லேருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலக்கிறதுக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ நாங்கள் 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃபார் கிரேசிங் திஸ் ஒகேஷன். கிட்டத்தட்ட 450 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்டையர் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி இதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. எப்படி பிஸ்னஸ் தமிழ்நாடுல என்ன க்ரோ பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடுல எடுத்துகிட்டு வரலாம். நம்ம சிஎம் வாண்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாடு எப்படி நம்பர் 1 எக்கானமி பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் டூயிங் திஸ் பிஸ்னஸ் கான்க்ளேவ். நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் பண்ணி தமிழ்நாடு 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி பை 2030 எப்படி பண்ண முடியும், அதுக்கு வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அண்ட் திஸ் இஸ் எ பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த மீடியா ஃபார் கமிங். தேங்க் யூ. इस कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान, अभी हमारे बीच से पधारे आईटी के मिनिस्टर्स आदरणीय त्यागराजन जी, हमारे बीच में विराजमान राजस्थानी प्रवासी समाज के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र श्रीमाल जी और माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष जी आदरणीय गौरी शंकर जी राठी जी,
सुनील श्रॉफ जी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी, और जयपुर से हमारे साथ पधारे आदरणीय महावीर चौधरी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेश जैन जी, और सामने विराजमान पूरी इस चेन्नई से और पूरे स्टेट से पधारे सभी महानुभाव। हिंदी में आप कंफर्टेबल तो है ना, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि श्रॉफ साहब ने भी और सुरेश जी ने, सबने, राठी जी ने, सबने अंग्रेजी में बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कर्मभूमि के साथ साथ हम जन्मभूमि से भी कहीं न कहीं हल्के से तार जोड़े रखे हैं। वैसे आप यहाँ आए, हमें फ्लाइट में ही लगभग 2.5 घंटे लगे जयपुर से, और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी बातचीत भी हुई काफ़ी लोगों से, कल से आज से मेरा मिलना हुआ, तो कोई बता रहा है कि हमारे 100 साल से पहले आदरणीय शिवाल साहब से बात हुई तो बता रहे हैं 100 साल पहले हम आ गए थे। किसी से पूछा कितने, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए। 60 साल पहले किन कठिन परिस्थितियों में आप यहाँ आए होंगे, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और जब ये कहावत भी याद आ जाती है अपनी, वो जो विशेष अपने लिए कहा जाता है मारवाड़ियों के लिए, कि जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आकर के, किस तरह से आपने अपने काम को बढ़ाया, काम को बढ़ाने के साथ साथ जो सम्मान प्राप्त किया। अभी यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ के वैश्य समाज के प्रति जो भावनाएं रखते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार आप सब अपने आप के लिए जरूर ताली बजाएं। जिस प्रकार के आपने सोशल वर्क किए हैं, कैसे हम किसी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पेट बनाना, वहाँ सोशल वर्क में भी अग्रणी रह करके जिस प्रकार से आपने जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही साथ मैं सभी से बातचीत भी कर रहा था, तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये हुआ कि तीनों संस्थाएं, अग्रवाल समाज की भी, माहेश्वरी समाज की भी और जैन समाज, और सब मिलकर के आज ये जो आयोजन कर रहे हैं, मैं आदरणीय जैन साहब का और तीनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सुंदर आयोजन आपने किया, कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, और एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद क्या कुछ हम अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए। आपने जिस प्रकार से यहाँ पे सभी वक्ताओं को बुलाया, एक वक्ता को मैंने भी सुना, तो निश्चित रूप से हम जो समय के साथ चलने की जो बात करते हैं, बहुत सारी बार हम देखते हैं लोग जो है वो भीड़ चाल, अब इधर थोड़ा सा समझते हो तो थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल जो रहता है हमारा सोचने का तरीका, उससे अब हमें कहीं ना कहीं आगे निकलने की जरूरत है। और उसी दिशा में आपने अलग अलग जो स्पीकर्स यहाँ बुला करके, और सभी अपने अपने तरीके से विचार भी रख रहे हैं, और हमारी जो जैन जी के बारे में भी बात हुई, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी हम किस प्रकार से समन्वय रखें, आज हम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आपने अपने बहुत अच्छा ये आज ने प्लेटफॉर्म दिया है। हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, और तो और शायद कोई नेहा जी जो है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएंगे, कैसे समन्वय, परिवार में समन्वय के बारे में भी उस पर चर्चा होगी। तो बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट लिया है। और समाज सेवा में भी जब मैंने पूछा, तो ऐसे अनेक सेवा के काम आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए, चूँकि मैं राजस्थान से आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा वहाँ राजस्थान में जो है कोऑपरेटिव और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी। थोड़ा सा मैं राजस्थान की बात भी जरूर करूँगा कि आप यहाँ कर्मभूमि आपकी चेन्नई है, आप यहाँ अच्छा काम करें। इसके साथ साथ मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि हम राजस्थान से भी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो
मारवाड़ी होने के नाते तो आप राजस्थान से भी जुड़े और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं, मैं इस अवसर पर आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि उन्होंने ये 10 दिसंबर जो अभी गई थी 2 दिन पहले, उन्होंने आप सब पूरे देश में जितने भी प्रवासी राजस्थानी है, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी अगर कहीं राजस्थानी बसा है, उसके लिए उन्होंने again today. It brought back the memories of our ancestors who traveled from north to south with nothing but courage and hope. Their struggles, their sacrifices, their dreams are the reason we stand successful today. That story connected us all because it is our own story. And from that emotion came a realization. We grew because someone supported us, and now it is our turn to support others. This is the soul of Bizfest, not just business, but giving back, lifting each other, and growing as one strong family. Bizfest is not just an event, it's a family, a network built on trust, respect, and shared dreams. What is our vision? The vision is simple but powerful. To build a largest North Indian business ecosystem in South India, to create opportunity for every entrepreneur, big or small, to empower youth and women of our community, to combine North Indian values with Tamil Nadu's rich cultural, to ensure business growth with social impact go hand in hand. Vikas bhi, Sayog bhi. This is not just platform, this is our legacy for future generation. What's special about this event today? The event is big, sharp and impactful with a strong speaker lineup, a full day of learning, insights and inspiration, cross-community business collaboration, one-to-one networking opportunity for real business growth, a platform that will keep creating opportunities even after today. The road ahead. This is just the beginning. Bizfest team will roll out business conclaves, exhibitions, networking events, mentorship program, skill building workshop, all with one vision, to help every business grow together. Our belief is simple. We grow with your growth. Let's grow together. Thank you. And introduction. I'm privileged to be here with the Honorable Minister from Rajasthan, Shri Gautam Kumar Dak, my friend Narendra Sri Shimalji, the President of Rajat, from Jito through Mahavir Chaudhary, from the Maheshwari Association through Gauri Shankar Rati, from the Agra Trade Group through Sunil Sharoff, and the chairman for the conference through Suresh Gundecha, otherwise Suresh Jain, as we say. Good afternoon, Vanakkam. Thank you, as I say. I must say that this is my second event with the Rajasthani Association of Tamilnadu. If some of you saw the slides going earlier when they introduced the association, I was the MLA and the chief guest to give away the scholarships, I think back in 2018, which I was very privileged to do. So it's rare, in fact, I think one of the great things about your community is that as much as you are active in finance, in business, in industry, in trade, you take an equal, if not greater effort in public welfare, in charitable activity, in other associations. So I commend you for that. And I'm happy that I started with the scholarships first and then I come here because I'm not sure I have much to tell you that makes any sense. I'm sure I have a lot to learn from you when it comes to business, but you're all the tycoons and I have to learn from you. I'm not sure I have much to add. But I should say, philosophically, we in Tamil Nadu are very happy that ours is a very multicultural society. And for more than a century, the Rajasthani community here
and in my constituency of Madurai Central, which is the area around the temple in Madurai, the contributions of your community to our state, to our growth, particularly to the field of education and health, has been immense. I am also delighted to note that the logo of your association, which I saw with the Tamil, the English phrase, which reflects our Tamil culture, as you know, going back centuries, the phrase Yadum Ure Yavarum Kelir, which is that all towns are my town, all people are my people, is reflected in your logo in terms of all countries. I am also happy to note that this is a first. I had, through mutual friends, met once with some of the committee members, and then they impressed upon me that this is the first time that Rajat and the Maheshwari Sabha and Agra Trade were all holding their conference together. And I thought such a power-packed event, actually it should be my privilege to attend rather than that I should give you the pleasure of being chief guest. But all of your communities have historically, through the years, held very eminent positions of leadership in our economy, particularly when it was a trading economy. And as the video of Rajasthan showed, I think hardship and difficulty shapes people. I was reminded of a quote the other day where it says, just as friction is needed to polish a stone, then difficulties and setbacks are needed to hone people. And I think a lot of your community, having come from a relatively arid and difficult to cultivate land, have gone on to do many wonderful things in many parts of the world. There's also a relationship with my party and the movement. I note that our party's founder, Thiru C.N. Annadurai, who was the kind of torchbearer for the value system that drives much of politics today. I mean, most of you are very familiar with it, but for those who have come, like our Honorable Minister, I must say that since 1967, some party that professes in its name or in its stance the notion of Dravidian politics, and by Dravidian politics we mean self-respect, societal equality, education for all, opportunity for all. So some self-professed Dravidian party has been at the helm of Tamil Nadu from 1967 till today. And the guiding light of this Dravidian political movement is Thiru C.N. Annadurai. And it's only fitting that he was the one who inaugurated Rajat back in 1967, as we saw in the picture there. It shows the shared values that we have. Tamil Nadu is a very unique state. For those of you who have read The Economist magazine, one of the more widely circulated economics and business magazines, recently carried an article, and it said, which is the best state in India? And for lack of time and space, it simply compared Gujarat and Tamil Nadu, roughly the same per capita income, but profoundly different societies. And I had the unique luxury of meeting the reporter who had come down from London via Mumbai. Reporter met me twice, once at the beginning of his tour around Tamil Nadu and once at the end of it. And in the course of those 10 days, I could see that his understanding of Tamil Nadu was differing quite a bit. Because when he came, he was looking to explain why Tamil Nadu was the only state that last year experienced 11.19% real GDP growth, that is after adjusting for inflation, only state with double-digit growth. And he thought it was about some short-term policy or some, fantastic investment summit or something. And I told him, why don't you go around the state and come back and then do some analysis comparing the statistics. And the article he wrote, when he came back to see me, it was pretty much in his head. And he clearly understood
the difference between, let's say, Gujarat and Tamil Nadu, roughly the same per capita income. Gujarat's economic growth over the last 10, 12 years has been much faster than Tamil Nadu's, some of it driven by better investment from the government of India and places like GIFT City. But where we differ a lot is that Gujarat's growth is driven by better power, better roads, better ports, and bigger industries. Whereas Tamil Nadu's power is driven by more investment in human capital. So just to give you the comparison, you can have economic outcomes with different societies. In Gujarat, less than half the youth graduate from high school. In Tamil Nadu, almost half the youth enter into college. Profound difference in the way people focus on education. And as I've seen through the many activities of Rajat and the other associations, you have understood the value of education in your own charitable and community activities, and you go through that. So in some sense, to me, the human capital model is the sustainable model irrespective of the changing circumstances. A minute ago, Thiru Gauri Shankar Rathi had talked about the fact that trade is increasingly disrupted around the world. We can say that probably since the Second World War till probably the global financial crisis, the world was continuously moving in one direction: greater integration, more dollar-denominated transactions around the world, WTO as the policeman and arbiter of global trade, one large international market, and hyper-globalization of goods, of capital, of services, and mobility of human beings, huge amounts of immigration. Ever since the financial crisis, and more acutely after COVID, we have started to see that model break down. And we must remember that globalization historically has always come in waves. It has not always been in one direction. The world was hugely integrated in the era of the Roman Empire. The Roman Empire stretched across most of the world, most of the then civilized world. You look at the era of colonialism. One of my ancestors used to travel a lot, and you could wire money from Madurai to Argentina or to Paris because the banking system was through correspondence banking in the colonial powers, the UK, France, etc. So colonialism was another hyper-globalization for its time, and then it fragmented again. More of us got independence, more of us got democracy, more of us got to set our own framework, our own priorities, and the global order was no longer established by any particular power. This era has been undoubtedly the American era for various reasons, but that is being dismantled actively by its current administration, who want to have a much more inward-focused approach. In the sense that we will see a lot more bilateral and regional and multilateral trade agreements as opposed to the global world trade order, then trading and the kinds of business skills that your community has are going to be vital for us to continue as a country to achieve the growth that we have. I have also had the luxury of being invited to some of the educational institutions that are run by one or more of these associations. I've been at MOP Vaishnav College, I've been at DG Vaishnav College. And I think this kind of continuously adapting education is going to be the key for the future of our people. We live in an age of artificial intelligence, or at least this age of artificial intelligence, where there is a profound shift in what work is actually done by computers and what work is done by human beings. As I spoke earlier this morning, that shift has already happened in the manufacturing and mechanical processes. I lived in the US for 20 years. When I went in the late 80s, it was still possible to have an hourly blue-collar job in the manufacturing industry earning $30, $25, $35 per hour in that day's money. Now almost all those jobs are automated away. What used to be about 100 people
in automobile assembly line is now at most 10 people. The robots have taken over everything. And in some cases, it is completely automated with no human beings. And there are some car factories that don't need electric light at all because the robots and sensors are working on infrared. That is the kind of change that will happen. It will not happen overnight, it will not happen in a year, it will not happen in 5 years, but it will happen in a generation or 2 generations. And our primary responsibility collectively is to keep ensuring that what we teach our children is relevant to what is going on in the world in terms of the transformation of the nature of work. And in the age of AI, what is it that makes humans different from the really sophisticated computers and learning models? In many ways, I think it is a chance for us to go back to the original notion of education, which was not merely to get a job, but to make people more humane, more cultured, more able to tell right from wrong, more able to validate the work of machines, more able to be aesthetically inclined, more creative. And I think all our educational institutions, particularly your charitable ones, which are playing leading roles, should also think about this. I have a personal connection, I must say, that I come from a community that has historically been vegetarian. And if you read the history long back enough, that means that most of us at one time were Jain. That's the only reason we're still Hindu, but vegetarian. As you know, Hinduism fell off in popularity and Jainism was the dominant religion of many parts of South India, all the way through South India and other places. Even now, in Madurai, some of the greatest antiquities are Jain antiquities. And so we know that our cultures have been intertwined for many centuries, if not just because of the community, but because of history. Anyway, I know that this is a vibrant community. I know that Saukar Pet is the economic heart of Chennai. All the tycoons sitting here drive our economy. And so I'm happy for your contributions to our economic growth. You truly add value to us. I wish you all a wonderful event today, first time bringing these 3 associations together. I see there are some eminent speakers, including my old friend through Amitabh Kant. And I know that you will all learn a lot. As our Maheshwari Association president said, you will definitely meet people who will add value to your business, to your understanding of the world. I hope also that you'll make some new friends and go on to have good relationships. I hope this turns out to be a Bizfest to remember, and for a pioneering event, first time across 3 associations. I commend all the organizers, the amount of work it must have taken to get this together. I ask for your excuse because I have to go home, change and get on a flight to Madurai in my party clothes. So I will leave quite rudely mid-event, but I thank you for your indulgence. Hope you have a great day. A memento to our guest of honor.